ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर सबको। यह है 1 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार। आज का मुरली का गीत है दुखियों पर रहम करो। तो बाबा का पहला कमेंट है कि रहम किसको कहा जाता है वो भी भक्तों को मालूम नहीं होता है। हम सब बहुत रहम मांगते हैं, ईश्वर को रहम दिल तो मानते ही हैं सबको, परंतु रहम का मतलब क्या हम समझते हैं कि कुछ जस्टिस मिले अथवा कोई न कोई ऐसे कोई मुक्ति मिले, ऐसे कुछ मन में होगा जब हम बोलते हैं कि रहम करो। परंतु बाबा समझाया करता है कि रहम का मतलब है कि बाबा अब भी हमें एजुकेशन देता है। तो बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली, बाबा की रहम है। बाबा रास्ता बतलाता है, भक्ति से छुड़ा देता है। और बाबा का कहता है कि रहम को समझने के लिए बेरहमी को समझना होता है कि किसने बेरहमी की। तो रावण को जलाते हैं लेकिन समझते नहीं है कि रावण क्या चीज है। तो ये 5 विकार बेरहमी करते हैं अर्थात अकल्याण। तो हम जब भी 5 विकार का उपयोग करते हैं तो इसका परिणाम निकलता है अकल्याण। तो बाबा हमें निर्विकारी बना देता है, ये है रहम। तो ज्ञान और योग से निर्विकारी बनना वो है रहम। तो बाबा हम पर रहम करता है आधा कल्प के लिए, क्योंकि हम निर्विकारी अब भी बनते हैं और बाबा हमें आशीर्वाद दे करके आधा के लिए कल्प के लिए रखता है निर्विकारी। फिर उस समय मम्मा भी थी, तो मम्मा भी बाजू की संदली पर बैठी हुई होंगी। तो बाबा कह रहा है कि देखो जगदम्बा भी सबके मनोकामना पूरी करती है ना, परंतु उनके पास क्या है वो मालूम नहीं है। तो जगदम्बा के पास भी ज्ञान है, ज्ञान से ही रहम, ज्ञान से ही प्राप्ति। और जगदम्बा और लक्ष्मी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि धन जगदम्बा से नहीं मांगेंगे, स्थूल धन लक्ष्मी से मांगते हैं, परंतु कनेक्शन नहीं समझते हैं कि पूर्व जन्म में लक्ष्मी जगदम्बा थी, मम्मा थी, और उनके पास ज्ञान धन था। उसी ज्ञान धन से ही ये स्थूल धन मिला है। तो ये भी समझने की बात होती है। फिर बाबा समझा रहा है कि ये जो भगत लोग हैं वो सब भगत लोग कोई न कोई प्राप्ति बाबा से जरूर लेंगे। कल का वीडियो मुरली में भी था कि सब बाबा के बच्चों को कोई न कोई ज्ञान का पॉइंट अथवा ज्ञान का पॉइंट नहीं है तो उनको कोई न कोई गुण का फायदा दो, वाइब्रेशन का फायदा दो, कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। तो बाबा से हमें फायदा लेना है, फिर वही फायदा बांटना है। तो ये मुरली 1963 के 64 में चली होंगी। 1964 में उस समय का पोप जो
कैथोलिक क्रिश्चियंस जो है रोम में जो होते हैं, उनका बड़ा पोप उस समय पोप पोल द सिक्स था। तो वो फर्स्ट पोप था जो इंडिया गया था। मुंबई में कैथोलिक का कॉन्फ्रेंस चलने वाला था और उन्होंने, उस समय शास्त्री जी था प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो क्योंकि पोप का सबसे बड़ा धर्म है दुनिया में, उनका 1 बिलियन फॉलोअर्स होता है, तो उनका आना बड़ी बात होती है। तो बाबा के बच्चे जो उस समय थे, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि जो उनका चर्च में जो कॉन्टैक्ट्स थे उनके द्वारा यदि पोप को निमंत्रण दे सके तो वो बाबा से मिले। क्योंकि कराची में जो उस समय के भोग संदेशी थे, उन्होंने देखा था संदेश में कि जो क्राइस्ट की आत्मा है और जो मुख्य और धर्म पिताएं हैं, वो एक दिवस बाबा से मिलने के लिए आएंगे। तो भाई बहनों ने समझा था कि शायद ये पोप क्राइस्ट की आत्मा होंगी। तो बाबा समझा रहा है कि जो वर्तमान के जो पोप हैं वो कुछ नवी क्रिश्चियन आत्मा होंगी, क्योंकि उनमें ताकत है, उनका पोजीशन अभी है। परंतु जो क्राइस्ट की आत्मा है वो अभी तमो प्रधान अवस्था में होंगी। तो वो क्रिश्चियन होगा परंतु शायद इतना बड़ा पोजीशन वाला नहीं होगा। जैसे आप सब देवी देवता हो परंतु आपका पोजीशन नहीं है अभी। तो बाबा ने कहा कि ऐसे बड़ी आदमी को मधु बनाना ये मुश्किल हो जाता है, परंतु साधारण जो होते हैं वो तो सह जा सकते हैं। तो क्राइस्ट की आत्मा कुछ साधारण क्रिश्चियन रूप में बाबा से मिलने के लिए शायद आ गया होगा, हमें क्या मालूम, शरीर तो अलग होगा। तो इस प्रकार से बाबा समझा रहा है। तो देखो पोप का ऐसे रहम सब मांगते हैं, पर जो सब धर्म पिता भी अभी बाबा से सलाम भरते हैं। तो देखो पहली आदि आत्मा है इस कल्प में, ब्रह्मा बाबा की श्री कृष्ण की आत्मा, उनको भी बाबा के आगे सलाम भरना होता है ना। तो सब और धर्म पिताओं को भी तो सलाम भरना पड़ेगा ना। तो इसी समय बाबा रहम करता है और बाबा ही सबके ऊपर दया और सबकी पालना और सेवा करता है। हम सब तो निमित्त हैं। तो बाबा समझा रहा है कि यदि आपको बाबा के दिल पर चढ़ना है तो आपको निस्वार्थ सेवा करनी है और अपना अवस्था परिपक्व बनाना है। तो हम सबको ये खास 4 स्मृति रखनी है। मैं मुसाफिर हूँ, मैं मेहमान हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ और मैं निमित्त हूँ। मैं मुसाफिर हूँ, मैं आत्मा मुसाफिर हूँ। तो इसलिए मैं इस व्यक्ति, इन आत्माओं से, इस घर में आदि मैं मेहमान हूँ। मैं तो मुसाफिर हूँ, मैं परमानेंट यहाँ इस व्यक्ति में नहीं रहता, मैं पासिंग थ्रू। तो मैं मेहमान हूँ। तो जो कुछ मेरे पास है मैं ट्रस्टी हूँ। तो कल भी बाबा ने वीडियो मुरली में पक्का कराया था कि ब्रह्मा बाबा का एक मुख्य विधि थी कर्मातीत बनने का कि शिव बाबा करावनहार है, मैं आत्मा करनहार निमित्त हूँ। मैं तो ट्रस्टी हूँ, सब बोझ बाबा शेठ है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। तो ये 2-3 रविवार की पहले की ये मुरली में भी था कि
आप प्रवृत्ति में भी रहते हो तो भी समझना है कि ये सब बाबा का है। आपका जो बिजनेस है, जो कुछ है, सब शिव बाबा का है। जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आप निमित्त हो, ट्रस्टी हो, वो है तो बाबा के बच्चे। तो सब बोझ बाबा पर रखना है और हमें न्यारा और प्यारा होकर के कर्म में आना है। ये कल का स्लोगन भी था ना कि उड़ता पंछी कर्म के टाली पर बैठ करके फिर ऊपर उड़ जावे। ऐसे नहीं कि हम टाली पर पकड़ करके बैठ जावे। तो यही है अभ्यास। नहीं तो देहाभिमान आ जाता है कि मैंने किया, ये मेरा है, मैंने फायदा दिया, मैंने ज्ञान दिया। परंतु सब कुछ शिव बाबा करा रहा है। यदि किसी को फायदा मिला तो बाबा के खजानों से मिला, बाबा के वाइब्रेशन से मिला। यदि कुछ भूल हुई, यह तो हमारी कमजोरी है, परंतु फायदा हुआ तो ये तो बाबा ने फायदा दी। तो ये भी बाबा पक्का करा रहा है। तो ऐसे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, निमित्त करावनहार को याद करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे और अपनी अवस्था भी परिपक्व। बाबा कह रहा है कोई प्रकार का रोना नहीं होना चाहिए। मन में यदि हम परिपक्व नहीं हैं, अंदर मजबूत नहीं है, एवर रेडी नहीं है, तो अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना। तो कल की वीडियो मुरली में भी बाबा ने समझाया था ना कि माया तो जाने वाली है, परंतु माया भी बाबा को कहती है कि बच्चे मुझे आवाहन करती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों का व्यर्थ संकल्प और कोई जो अशक्ति है से बाहर आ जाते हैं, तब माया आती है। तो ये व्यर्थ संकल्प को पूरा करना है और बस ट्रस्टी होकर के सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं, मेरेपन वास्तव में कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो है ही नहीं कुछ। तो ये रियलिटी में रहना, इससे हम डबल लाइट रह सकते हैं। ओम शांति। Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 1st of January 2022. A very happy New Year to you all. The song played before today's Murli is Have Mercy on Us, Sorrowful Ones. And so Baba is beginning the Murli commenting on this concept of mercy. As devotees, we ask for mercy a lot. But Baba says that we don't really know what that means. And when we think about mercy, we need to first of all understand what was it that was unmerciful? What was it that created the loss? And until we understand that, we're not going to understand what the mercy would be. So Baba says that in India, they burn the effigy of Ravan, but they don't know really who Ravan is. So once we begin to understand that Ravan, the devil, Satan, are the 5 vices, and that it's these 5 vices that have actually caused us a loss, and using those vices has caused us a loss. Those vices are the seed for sorrow. Then we can understand that actually asking God for mercy would mean that God, come and help us to become viceless. So it's that teaching that Baba provides in the Murli, and also the method of yoga to purify the soul. This is God's mercy. And that God would provide His mercy once in the cycle,
And he would provide that mercy in that way that he does, in this way of teaching that he does. As the teacher, this is something we didn't expect. But education is the mercy. So then we become more clear. And at the time Baba spoke this Murli, Mama was still there, and Brahma Baba used to sit on one of the gaddis, those sort of white backless chairs, those stools. And Mama used to sit on the other one next to him. She would often give the class before Baba came, and then Baba would come and speak the Murli. So Mama would just be sitting up there. So Baba's sort of referring to her and saying that she is the world mother, Jagadamba, and Jagadamba is worshipped as the one who fulfills everyone's desires, who has mercy. But what is it that she has? She also has the jewels of knowledge. So the mercy is the education. It's those attainments. And then people will call out to Lakshmi for physical wealth. But they don't understand that who Lakshmi was in her previous birth. She actually was Jagadamba. And so at this time, it's not actually calling out to God for physical wealth that matters, but it's understanding that God will provide the spiritual wealth, the wealth of knowledge. And then that wealth of knowledge then becomes physical wealth. So Baba now provides for us this purification process. He provides the knowledge, he provides the method, and as we become pure, we become viceless, then we gain that blessing to remain viceless for a full half cycle. And that's God's mercy. That's freedom from sorrow. And all devotees, they're going to call out to God for one thing or another. And in yesterday's video, Murli, Baba was saying to us that continue to take treasures from Baba and then distribute. If you can give knowledge, give knowledge. Otherwise, you can give everyone the donation of virtues. You can demonstrate virtues all the time, automatically. And also by staying in Baba's remembrance, we can donate powers through vibrations and also through our practical example. So Baba says that you have to take from Baba and then distribute. That's what it means to serve. But the treasures are always Baba's. And then all devotees will also take something from Baba, one way or another, whether it's directly from Baba or whether it's through Baba's children. But it's all Baba's. And even the religious fathers at this time, they have to take from Baba. In Karachi, one of the trance messengers at that time, one of the daddies, had seen a scene where the religious fathers come and meet Baba. And in 1964, Pope Paul VI had decided to visit India. And this was very unique because Pope had never visited India before. There were only 6 million Catholics in India at the time, so quite a small population. And mainly India has people of other religions, particularly Hinduism. So it's unusual for a Pope to make that trip. So Brahmin souls were excited about this because they thought that maybe what Baba said, that the Christ soul will come and meet Baba, that
India is the pilgrimage place for all souls. So they were thinking maybe this is what's happening. And the Pope was just coming to Mumbai it was only for a very short trip, like 2 or 3 days, something like that. And so they were hoping that they could use their contacts with the Catholic Church in Mumbai to get an invitation to the Pope to come to Mount Abu and meet Baba. But I was saying that there's so many protocols for such important people with such important positions. And at that time, Baba's institution was very, very small. So that was not going to happen. But what he's explaining is that the current popes, they're probably newer Christian souls. Whereas the soul of Christ would have passed through his stages and gone from his golden stage and would now be at the end of his own personal cycle. So there's a memorial within Christianity that Christ would reappear in a beggar form. And Baba says that the meaning of that is an ordinary form. So like you are all deities, but no one could tell. You're in an ordinary form now, because you're at the end of your cycle. So similarly, Christ would be part of the Christian religion, but maybe in a more ordinary position. And then that would be easier to meet Baba. So quite a few Christian ministers and other people have gone and met Baba in different conferences, and maybe the Soul of Christ was one of those. And Baba's saying, well, all of the different religious fathers, they'll come in one way or another to meet Baba, and if they haven't already, then they will do so in the future. But we probably wouldn't know who they are. We wouldn't recognize them because their body is different. But in this way, Baba is showing mercy and giving mercy to all. And then souls are filling themselves and then distributing. For us children, we have to win Baba's heart now. And Baba's explaining that that will only happen when we serve selflessly and also make our stage very strong. There are 4 main consciousnesses that we have to practice. 4 main awareness. The first is to be a traveler. The second is to be a guest. The third is to be a trustee. And the fourth is to be an instrument. I, the soul, am traveling through many births, and therefore I'm never permanently this person that I'm in. Therefore I'm a guest. I'm a guest in this body. I'm a guest in this particular circumstance. I'm a guest in these relationships. So being a traveler means that I remember I'm a guest. I'm passing through. And then if I'm a guest, then of course there's no such concept of ownership. Ownership is an illusion. There's no such thing. And so I have to remind myself that I'm just a trustee. I'm a trustee for everything that I currently have, and also for everyone. It came in a Murli a few Sundays ago that even if it's your own family or business, just consider it all to be Shiv Baba's. You are a trustee. Give all the burden to Baba. And in yesterday's video Murli as well, Baba was reminding us that Brahma Baba's main method to become Karmathit was to remember that Shiv Baba is Karavanhar, the one who gets things done, and that I, the soul, am an instrument. And so Brahma Baba was able to perform actions while remaining loving and detached, rather than becoming absorbed in the action. It was in yesterday's slogan that you have to be a flying bird
who just comes and sits on the branch of action, but then you have to fly back up to Baba again afterwards. So we have to develop that practice of detachment from actions and the results of actions. If anyone gains any benefit, then that's Baba giving them benefit, either directly through vibrations, or Baba has given us knowledge and we're sharing that knowledge. But it's still Baba's knowledge. Baba is teaching us virtues, and then others are gaining that virtue. So it's all Baba's. Baba's powers, Baba's virtues, Baba's knowledge. And we have to remind ourselves of that and not think that I can give benefit to anyone. I have to just benefit myself. And then Baba will benefit others. I have to just be a trustee and an instrument. And so let's practice those consciousnesses today. Om Shanti.